Have you ever thought why some people struggle to qualify one entrance exam? Well, there are some people, very less people, who qualify the same exam 3-4 times, or maybe they qualified 4 or 5 different entrance exams. What is the secret? What is the secret that some people qualify exams so easily while others keep struggling? So, this question was bugging me for long, and we did our research and found out that yes, there is a recipe behind this kind of success. So today I'm going to show you that strategy, that recipe, and today I'm going to call it how to be a better exam taker. That means you're not just going to study concepts, but you're going to become a better exam taker by the end of this video. So let's get started. So as you can see, today we're going to talk about competitive exams in particular. Now, what is happening in the competitive exam space is very different than the university exam space. So please don't get confused. This is not about university exams. This is about competitive exams, which takes care of multiple choice questions. Okay. Now, multiple choice questions have a peculiar thing, and that is the 4 options decide your results. Okay. That means your chances of getting success is only when you have marked the right answer. And if you by mistake mark the wrong answer, negative marking rejects you. Now, we already know this. But here is some truth about our entrance exams. Now, we all get teachers, right? We all have teachers in our coaching institute, or we all have teachers in our universities. But the truth is, all teachers will teach you only one subject. Okay? They'll not teach you more than one subject. So if they are going to teach you only one subject, the problem is you are going to write all the subjects. Teacher will teach you one subject, but you have to study all subjects. For example, let's take the NEET exam. So you have a physics, chemistry, biology. If you take the CSIR NET exam, you have 13 units equivalent to 13 MSc entrance exam syllabus. So when you look at that, the crux of the matter is, aapko sab padhna hai. You have to study all, but your teacher teaches you one. Now, the third part, only you are going to write the exam, not your YouTube guru, not me, not anyone else will write the exam for you. Only you, that means your brain. Okay. So only your brain is going to go inside with you in the exam. Now, what does that mean? That means that you have to prepare well. Yes, you have to study. Of course, we all help our students to study well. That means you have to memorize. Of course, you have to use all the memorization techniques, which I will show you. You will have to recall faster during the exam so that you can solve as many questions as possible. But there is one thing missing, my dear friend, and that makes you a better exam taker. And if you are not a better exam taker, how much ever you have studied, you will collapse in the exam. Now, these are very fine nuances, very fine things which I'm going to talk about today. And here in this video, I want to start with Mahabharata. Now, let us look at Mahabharata. Mahabharata was nothing but a competition or a battle. Now, in that competition, there were Kauravas and Pandavas, right? Now, Kauravas had the army at their disposal, the biggest army, right? But Pandavas had skill set, okay? Plus, they had the guidance of Krishna, okay? Now, Lord Krishna was a master strategist. Whatever we are going to talk today is not the concepts, not the army, but the strategy. We all are going to talk about Krishna. Yes. What happens when you have the right concepts? If you have the right concepts, your chances of qualifying is higher. But if your strategy is wrong, you cannot win. Truth be told, Pandavas defeated Kaurava. How? Because they had the guidance of Krishna. And this video is going to be your guiding light in this competitive exam and its serial success. So now,
what exactly makes you a better exam taker? That's the question we are going to deal with today. And like I said, we have to learn with our logical mind, not the regular mind which we all have. We just cram concepts and try to vomit in the exam. That's not how you win the competitive exam. So first point which I would like to bring in here is strength and weakness. Now, what happens when you analyze your strength? So let's create a table. You have your strength and you have your weakness. Now, let's say biology is my strength, while physics is my weakness. I can say that. Okay, chemistry may be my strength. So, first thing, when you know all your strength, okay, and when you know all your weaknesses, okay, not subject wise, topic wise also, you have to find out what is your weakness. Remembering formulas is your weakness. um, you know, remembering the names is a weakness, remembering the scientist name, whatever it is. So you have to find out your strength, find out your weakness. Now what you have to do is, you got to strengthen your strength. You have to strengthen your strong areas. जो भी आपका, whatever is your strong area, please strengthen it, and then plug the loopholes in the weak areas. So that's the first point. What the toppers do, what the serial qualifiers do here, who qualify multiple exams in one go, they work on their strength. They strengthen their strong points and plug the loopholes in the weak points. That's my first pointer for today. Now, let us understand the second point, and that is understand the paper setter psychology. Now, what is happening with the paper setter? Let's look at that. The paper setter has got only one task to do. And what is that task? The task is reject. His task is to reject you. Yes. And you have to understand his psychology. That is why the paper setter will make the question paper in that way. Okay. So, why they made this paper this way? So, whenever you're looking at a previous year question paper, think what kind of goal this paper setter wanted to achieve. Just like we try to understand our family members or friends, same way we have to understand the psychology of the question paper setter. So, why this paper was made this way? What they wanted to test in me? And what is the logic of this test? Why exactly they're conducting this test? If you understand these 3 points, you can easily understand, okay, what is going in the mind of the paper setter. If you can read the mind, you can strengthen your weak areas, because definitely the paper setter will always set your questions which will hit you on your weak areas. So if you already understand the paper setter psychology, you can plug those loopholes. And that's what serial toppers do. Now, this may sound like a bit advanced level, but trust me, it's very simple. Once you try out, you will realize that it is a piece of cake. Just that you have not done it till date. Once you start doing it, it will be helpful. So now quickly we'll move on to the next point, and that is analyze the question paper. Now, what is really happening in the question paper? The best part is all the previous question paper is available. Okay, I'll put it down in the description. Please download it. Okay, so all the CSIR Net Gate papers are available. You can download. Now, please print it. Okay, print it and then analyze. While analyzing, we have to do strategic. You have to understand the strategy first, right? And you start solving those question paper. Be strategic. Whenever you're solving any previous year question paper or during the exam also, this is something which I have seen with all the toppers. They will take the first pass, okay, and then the second pass. Now, what really happens in the first pass? In the first pass, they will solve all the easy ones. They'll go and pick all the easy questions, they'll solve it. So by the time they move to the second pass, which is the final phase probably, they will have some confidence. They would have already gained confidence because probably they would have saved, scored 30 or 40 marks more than a regular person. Now, in general, all of us, how do we do? We always start from first question, we go to the last question. No. First, pick all those questions, be strategic. First, choose all those questions which you want, which you think is easy, solve it in one go. So, first pass is over. Then go for the second pass. Now, after you are done with the second pass, you have already solved. Remember, you have to resist negative marking. You have to resist lucrative or confusing questions. Then you go for a review.
Okay, so this is how you analyze the question paper as soon as you get it. Don't start from question number 1 to go to question number 2, 3, 4. First pick those questions which is easy, solve them first. Now let's go to the next point, which is when in doubt, skip. Now what happens if you try to solve a question which is doubtful? You think probably you can score. But remember, any question, if you are not sure less than 90%, don't touch it. Okay, if you're not sure less than 90%, if you're sure more than 90%, okay, then maybe you should touch it. I would suggest, unless you are 100% sure, don't touch it, right? But of course, not always that can happen. So okay, you can take chances, you can go up to 90%. But if you are like, okay, 60-40, I'm not sure, maybe, may not be, don't touch. Because remember, your paper setter psychology is he wants to reject. For example, say NEET exam, 16 lakh people will write and only 85,000 will qualify. So what does that mean? The psychology of the paper setter is to reject maximum of you. Same way, CSIR net, 1 lakh people will write and only say 3,000 people will qualify. Right? So paper setter psychology here is again to reject the 97% of you, 98.5% of you. So that is where whenever you are in doubt, chhod do, skip it. Okay. Now let's go to the next point, which is learn the MCQ tricks. Now, multiple choice questions. Gone are those days when your exams used to be subjective. Now it is all objective questions, 4 options. Now, first thing you should practice is called as a hide options method. Let me enlarge it. So, hide options method. Now, what really happens in the hide options method? Without looking at the options, okay, look at the question and in your mind try to think what could be the probable option, probable answer. After that, you look at the options. So, that is one way of doing it. The second way of doing it is elimination. Okay, you could not get answer. So the elimination is now look for the wrong answers. Okay, now you look at the 4 options. Remember that kaun banega crorepati 50-50 lifeline. Same way, remove those options which you are definitely sure that this cannot be the answer of this question. Remove those. Then look at, okay, how many options are left now, and then think, can I solve it? If you can, do it. Otherwise, skip it. So that's the point number 2. Now, point number 3, match the following MCQs. Now, match the following is very easy. There will be A, B, C, and then there will be 1, 2, 3, and then you have to match it, right? Whenever you are matching, it's possible that when you look at the answer options, it is easier to look at, because if 2 of them are matching, the third one will definitely fall into line and you don't need to even solve the entire question. Okay, so match the following always works in your favor in MCQ. Always try those questions. Now, let's look at the next point, which is learn first, practice double the hours of time you learned. So suppose you learned the concept for 2 hours. Okay, now my suggestion is go ahead and practice questions on the same topic for 4 hours. And how do you do that? You have Biotecnika app for your rescue. In Biotecnika app, you have almost every question paper, every topic inside the app, and it is free of cost. We are providing to all the viewers who are watching this video. Just fill the form and I'll send you a coupon code which you can use to practice as many questions as you can. So what happens here? Now, suppose you studied cell biology for 2 hours. Now, you need to practice questions. The previous question paper, the current mock test papers, the aim nets and test series which Biotecnika has, do it extensively. The more you do it, the better you get at it. That is why I'm saying I'll give you a offer here. Please download the Biotecnika app. Okay, if you go to Play Store and type this Biotecnika, okay, app, and download the app, go to the buy courses section. I'll give you a coupon code. It is below. You can choose that and you will get this test series for free where you can practice as many times as you can. Okay, let's go back to our video now. So the next point is reverse engineer concepts to questions. So now this is a very popular strategy which I used to follow and a lot of students follow even in Biotecnika today. And that is whenever you study a concept, let's say you studied a concept which is Michaelis-Menten equation, right? Now, you try to frame in your mind what kind of probable part B and C questions can come from here. Okay.
and write those questions down. Frame questions. So basically, what you're doing is you become the paper setter, right? You become the paper setter and think, okay, what kind of questions can really come from this? And frame those questions, okay? Probably you can ask your friend to frame the questions for you and you try to solve, or maybe you frame the questions, ask your friend to solve, and then you have a debate and solve it. This way, when you reverse engineer concepts to question, whenever you will see the question, you will be easily able to convert them to concepts. So this is the next point. Further, time your questions. Now remember, whether you are Ambani, Adani or Shekhar Suman, there is only one thing which you all have in common, and that is time. Whenever you see a MCQ, okay, you have to solve it in a faster manner. So my suggestion is, please read very carefully, because biology has got many words which are very similar, like neurons and nephrons, very similar, right? It's like, just today I read a meme where somebody said it is so hard that today Tajurba I'm reading as Tarbooj. So basically, this is what happens when you are biased, right? So when you don't read the question properly, and when you try to read it by cramming, just skipping some words, you may read neuron as nephron, and that is where the disaster happens. So here we go. First thing, read the question. And you have to read it fast, right? So you have to read and focus fast. Now, at the same time, solve without looking the options. And then, like I said earlier, and if you're not able to solve, then you look at the options and try the elimination method. So that's where it is. But all this you have to do in less than 1.5 to 3 minutes. Okay, part C questions 3 minutes, part B and part A 1.5 minutes. That is the kind of timing you have to set for yourself. Then only you can survive in this cutthroat competition. Next, practice question selection decision making. Now, we all practice this in Biotechnica. How do we do this is, we give a question paper to the student, okay? And we say, okay, question number 1, 2, 3, 4, okay? Now, have a glance at it and you get, say, 3 minutes and tell me whether you will take up question number 1, question number 3 and question number 5 or not, yes or no, right? So basically, when you look at that, you're basically looking at the question and deciding whether I will solve it or not. Because if you try to solve a wrong question, a trap question or a tough question, probably you will end up wasting a lot of time. Remember, nobody is going to give you a Nobel Prize for solving a tough question. The game here is to tame as many easy questions as you can. Okay, concepts sab padh ke aate hain. Everybody reads concept, but how fast you can do it, that's what makes the difference. So that's about practice question selection decision making. Now, next is implement memory tricks. Now, what kind of memory tricks we can actually follow? Now, if you have followed my video till now, you must have seen that I'm talking all the things logically. That means my previous statement and the next statement is connected. That's how you study. Remember, our mind remembers faster when we connect things. See, our brain is all about neuronal connections. We understand connections better, correct? You are watching my video because you connect to me, right? That's what the connection does to each other. So mind thinks logically, right? Mind thinks logically. So arrows and connectors. That's the first point here. The next is comparison tables. For example, you want to buy an Android phone or Apple phone, right? So which phone you want to buy? You will say, okay, Apple has got this feature, Android has not got. But Android has this feature, Apple has not got. So this way, what happens is, whenever you look at this side of the table, automatically the other side you will remember, right? So this becomes a very important tool. We call it as comparison table or concept table, whatever you call it. Now, next is concept wheel. Now, you can always create that, or you can buy from Biotechnica. So you have a wheel, you have a central idea, say, phosphorylation, and then the phosphorylation has all the features written over here in a colored format. So when you look at the wheel, you recall, your memory gets rejigged faster, because mind remembers colored things better than black and white things. So that's another way of doing it. The next one is formula charts. So formula charts you can design, or you can also have a derivation in front of you. So you can derive the formula, keep it in front of you when you're studying. Every day look at it, you will remember, because again, mind thinks logically. So this is all about the implementing the memory tricks. Now next,
must review the question paper. Now, what's happening in the question paper? The previous year question papers, PYQs, I'll do a separate video on this. So, PYQs have got tremendous potential. It's like, suppose I tell you that 1 year from today, you're going to attack Pakistan, or say any country, right? You're going to attack any country and you're in the army. So you have to prepare. So the first tool which you have got is the previous year question paper. So you have to sit with the previous year question paper, print it out, and think that you are in actual exam conditions and try to solve. Okay, I'll make a separate video on this so that you'll get more tips on how to solve the previous year question papers. So that's my point here. Must review the question paper, and then ability to maintain focus in the exam hall. Now, you know what happens in the exam hall? Somebody is coughing, somebody is sneezing, somebody dropped the pencil, somebody, finished early, and then you are like, "Arey, iska pehle kaise ho gaya? How this person finished early?" Maybe on the road that day, somebody is getting married and dancing on the road. All these things happen. Tell me, am I wrong? Now, this all is distraction. How do you maintain your focus in the exam hall while others are doing all sorts of activity? That makes you successful. Now, moving ahead, managing anxiety and nervousness. Now, suppose you solved the first pass and now you could not solve max questions. What happens next? Anxiety and nervousness. You have to calm your mind. Remember, your mind is the only thing which is going to help you solve the paper, right? So you have to keep your mind calm, avoid nervousness, practice mental acuity, mental calmness, and for that, the best thing is meditation. If you do meditation on a regular basis, that's where you will stay calm while others will panic after looking at a tough question paper. Now, here is your bonus tip for the day, which is my last tip, and that is take care of your body. Your brain depends on your body. Now, have you ever thought that, okay, let's call it this way, this is my head, it contains my brain, but do you think this head is floating in the air? No. This brain is nothing without this body. So unless my body is well fed, well exercised, and well trained to sit for long hours, neither I can shoot this video, nor you can watch this video, nor you can write the exam. So here are the top 10 plus one bonus tip for you on how to become a serial exam taker, a trained exam taker who qualifies multiple exams in one go, or maybe the same exam in a serial manner. Remember, your success depends on not just the concepts you study. You don't need just the knowledge, but you need a strategist, you need a master strategist, you need a Krishna, and this video is your Krishna in this competitive exam, in this Mahabharata of your life. I wish you all the best, and I urge you to watch videos which I am putting after this video, which will help you prepare better, train your mind, train your brain better, because the neurons which wire together, fire together. So all the best to all of you. See you in our next video. Take care. Bye-bye. कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सालों लगा देते हैं और नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक ही साल में 4-5 एग्जाम क्वालिफाई कर गए, या फिर शायद एक ही एग्जाम को साल दर साल क्वालिफाई किए जा रहे हैं। कैसे कर पाते हैं ये लोग? क्या खाते होंगे ये लोग? है ना? सोचा होगा आपने कि आखिर ऐसा होता कैसे है? तो इस सवाल को हम सभी काफी दिनों से सोच रहे थे। इस पर हमने रिसर्च किया, करीब 5-7 हजार लोगों पर हमने सर्वे किया, तब हमने ये चीज पाया, और उस रिसर्च को मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं, ताकि आपको पता चले कि आप भी साल दर साल सेम एग्जाम या बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है भारत में बहुत सारे हैं, और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो कुछ तो होता होगा इन सीरियल क्वालिफायर्स में, ठीक है? जैसे नेटफ्लिक्स में सीरियल किलर्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीरियल क्वालिफायर्स होते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर ये क्वालिफायर्स बनते कैसे हैं और इनका सीक्रेट क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी अ बेटर एग्जाम टेकर। एक अच्छा एग्जाम टेकर कैसे बने ताकि हम सीरियली बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकें इस पर्टिकुलर देश में, जहां पर कि हर महीने करीब 4-5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स को बहुत सारे एग्जाम लिखने पड़ते हैं, बट सच्चाई ये है कि एग्जाम्स होना अच्छी बात है, उससे शायद हम भीड़ से अलग दिख सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर कैसे हम बेटर एग्जाम टेकर बन सकते हैं, ज्यादा क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम्स। सो पहली चीज ये मैं बता दूं कि ये एक रेसिपी है। जैसे आप कुछ खाना बनाते हो, दाल बनाते हो, चाउमीन बनाते हो, पुलाव बनाते हो, बिरयानी बनाते हो, तो क्या है, ये एक रेसिपी है कि इस तरीके से बनाओगे तो टेस्ट ऐसा ही आएगा। मतलब कि ये एक्चुअली एक रेसिपी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो अब आते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न पर, जो कि है 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, हर क्वेश्चन में 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, यही आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं या आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं। मतलब कि आपके चांसेस क्वालिफाई करने के उतने ही हैं जितने आपके कॉम्पिटिटर के हैं, बशर्ते कि आप 25% मतलब कि सही आंसर ऑप्शन को क्लिक कर रहे हो और रॉन्ग को छोड़ रहे हो। मतलब कि एक रिजेक्शन गेम है, सिलेक्शन गेम नहीं है। आपको 75% ऑफ ऑप्शन को छोड़ देना है, 25% को सेलेक्ट करना है। लेकिन अब एक सच्चाई पे मैं आता हूं। सच्चाई ये है कि आपका टीचर तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, करेक्ट। सच्चाई है कि आपका टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है। और दूसरा सच्चाई ये है कि आपको तो सारे सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे जाके एग्जाम में। अगर आप नीट लिख रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अगर आप CSIR नेट लिख रहे हो तो 13 यूनिट्स है। अब टीचर तो कोई एक यूनिट पढ़ाएगा, लेकिन आपको सारा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर सच्चाई ये है कि एग्जाम तो सिर्फ आप लिखने वाले हो, ना आपका टीचर, ना मैं, ना कोई भी यूट्यूब गुरु। तो मतलब कि आपका जो ब्रेन है, इसको लॉजिकली आज ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ट्रेन करने के लिए मैं थोड़ा सा पास में जाना चाहूंगा, और वो है कि आपको महाभारत में जाना पड़ेगा। तो महाभारत में जाने से पहले ये देखते हैं कि आपको और क्या क्या चीजें करनी है। हाँ, आपको बेहतर प्रिपेयर करना, बाकियों से बेहतर पढ़ना पड़ेगा, बाकियों से बेहतर मेमोराइज करना पड़ेगा, और बाकियों से फास्ट रिकॉल करना पड़ेगा, वो तो है। लेकिन अगर आपको बेटर एग्जाम टेकर बनना है तो आपको महाभारत से सीखना पड़ेगा। महाभारत में 2 पार्टीज थी, कौरव और पांडव, ठीक है। अब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई। कौरवों के पास सेना थी, ठीक है, बहुत सारी। ऐसे सोच लो कि आपके कॉम्पिटिटर जो आपका एग्जाम में लिख रहा है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है। किसकी? कॉन्सेप्ट्स की। उसको बहुत नॉलेज है, ठीक है, उसको बहुत नॉलेज है। लेकिन आपके पास क्या है? स्किल सेट। और आपके पास क्या है? ये वीडियो जो कि आपको एक कृष्णा की तरह गाइड करेगा कि कैसे आप कम नॉलेज होने के बावजूद भी आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, नॉलेज तो बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे अपने दिमाग को आप प्रोग्राम करोगे कि आप क्वालिफाई कर जाओ, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं कि हम कैसे एक बेहतर एग्जाम टेकर बन सकते हैं। और उसका पहला पॉइंट आपके सामने है इस वक्त, और वो है एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब देखिए, आपका स्ट्रेंथ क्या है। एक कॉलम बनाइए, ऐसे एक टेबल बनाइए, इधर स्ट्रेंथ लिखिए, इधर वीकनेस लिखिए। मान लीजिए कि आपका स्ट्रेंथ है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और आपका वीकनेस है मैथ्स या फिजिक्स। जो भी आपका वीकनेस है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अपना वीकनेस बताइए, अपना स्ट्रेंथ बनाइए। सो उसको एक पेपर पे लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है? स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। आप अपने जो मजबूत टॉपिक्स हैं उसको और मजबूत कीजिए, कि अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप उसको तोड़ पाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपने वीकनेस को प्लग कीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक दीवार है, बहुत सारे होल्स हैं, तो उसमें प्लग करेंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा, करेक्ट। वैसे ही अपने वीकनेस को प्लग कीजिए। अगर वीकनेस को प्लग कर लिया तो ऑब्वियसली आप टॉपर से बेटर टॉपर बन सकते हो। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला है। पहला पॉइंट विच इज एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्लग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अगली चीज, अंडरस्टैंड द पेपर सेटर साइकोलॉजी। अब जो आपका एग्जाम में जो पेपर सेटर है, जिसने वो पेपर बनाया है, उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप कैसे पढ़ सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर जब आप उठाओगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों इस पेपर को इस एग्जाम पेपर सेटर ने इस तरीके से सेट किया, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि ये टेस्ट उन्होंने मेरे लिए बनाया क्यों, रीजन क्या था कि उन्होंने टेस्ट इस तरीके से बनाया, ठीक है। और तीसरी चीज, आपको समझ में आएगा कि लॉजिक क्या है, इस टेस्ट को कंडक्ट करने का लॉजिक क्या है। और लॉजिक जब आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो पूरा गेम रिजेक्शन का है बॉस। आपको सेलेक्ट करना वो चाहते ही नहीं है,
वो आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी ही स्ट्रैटेजी उन पर अप्लाई कीजिए। मतलब कि आपको आंसर ऑप्शंस में से 3 को रिजेक्ट करना है, 1 को सिलेक्ट करना है। जैसे वो 2.5% लोग को सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप 75% को रिजेक्ट करना है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो आप पेपर सेटर की साइकोलॉजी को जब समझ जाओगे और उसके बाद देखोगे कि आपका जो वीकनेस है, पेपर सेटर हमेशा उसको अटैक करता है, ठीक है, चाहे तो कंफ्यूज करके, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्विस्ट करके, चाहे बहुत ही सिमिलर आंसर ऑप्शंस देके। तो इस तरीके से वो आपके वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, आपके ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करता है। तो आप अगर पेपर सेटर की साइकोलॉजी को समझ गए तो उसको आप आराम से उसके ट्रैप में नहीं फंसोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं, एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम के अंदर, व्हाट यू विल डू, यू विल गो अहेड, आप पेपर लोगे। जनरल बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एंड तक पढ़ते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको पहले स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना है। स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले क्वेश्चन को फर्स्ट पास दीजिए, सेकंड पास दीजिए। मतलब फर्स्ट स्टेप में उतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए जो आपके लिए इजी है। इजी क्वेश्चंस को पिक करते जाइए। मान लीजिए कि इस फ्लोर पर बहुत सारे मार्बल्स, मतलब कि छोटे छोटे कंचे गिरे हुए हैं, आप जो इजीली उठ रहा है उसको उठा लीजिए, बाद में जो थोड़ा सा मुश्किल से उठेगा उसको उठाइए। वैसे ही तो पहले इजी क्वेश्चंस को उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट पास। नाउ सेकंड पास में आप क्या करोगे, उस जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आप रिव्यू करोगे, ठीक है। और इस चीज को अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट निकाल के उसको भी एनालिसिस करो, उसको भी स्ट्रैटेजिकली समझो कि कैसे करोगे, उसको भी सॉल्व करो। फर्स्ट पास, सेकंड पास, रिव्यू, फर्स्ट पास, सेकंड पास, रिव्यू। सो 1 2 3, फर्स्ट पास, सेकंड पास, रिव्यू। इफ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करोगे तो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, जब भी हो डाउट छोड़ दो। जब भी हो डाउट छोड़ दो, मतलब डाउट का कहना क्या है कि देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, अब आप 60% श्योर हो और 40% श्योर नहीं हो, क्या करोगे, छोड़ दो। अगर 90% श्योर हो या उससे ज्यादा हो तो ही उसको सॉल्व करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। मैं तो कहूंगा जब तक 100% श्योर हो मत चूज करो, बट हाँ उसमें मुश्किल हो जाएगी, बट ठीक है, 90% एंड अबव अगर आप श्योर हो तो ही उस क्वेश्चन को टच करो, नहीं तो क्या होगा, फिर से आप फंस जाओगे पेपर सेटर की साइकोलॉजी में। वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग। वो तो चाहता है कि आप गलती करो, आपको गलती नहीं करनी है। तो व्हेन इन डाउट स्किप, जब डाउट हो क्वेश्चन में छोड़ दो, 90% से कम श्योर हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं लर्न एमसीक्यू ट्रिक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसकी ट्रिक होती है, बहुत सारी ट्रिक्स है। पहली ट्रिक है कि आपने आंसर ऑप्शन को से छुपा दिया, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर दिमाग में सोचो, अच्छा इसका ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है, हाँ मिस्टर XYZ हो सकता है। चलो अब ऑप्शन में देखो क्या XYZ है, हाँ है तो टिक कर दिया, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हाइड ऑप्शंस। दूसरा है एलिमिनेशन, जब पहले पॉइंट से नहीं हुआ तो दूसरे पॉइंट पे आओ। एलिमिनेशन मतलब कि कौन बनेगा करोड़पति में, आपको याद है लाइफ लाइन 50-50, तो 2 ऑप्शन छुड़ा दिए, वैसे ही आप ऑप्शन छुड़ाते जाओ, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेट नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हो सकता है, तो शायद ये होगा। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम आता है। तीसरा हो गया मैच द फॉलोइंग। अगर ये मिल गया तो आपको भगवान मिल गए एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जनरली जो 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, उसमें सीरियली दिया होगा ABCACB या फिर ADC ऐसा करके। तो अब अगर आपको 2 भी पता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आप टिक कर सकते हो कि हाँ यही होगा। तो मैच द फॉलोइंग तो आपके लिए वरदान है, कभी मत छोड़ना। सो दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट। आते हैं अगले पॉइंट पर, वो है पहले पढ़ाई करो और फिर जितना घंटा पढ़ाई किया ना उसका डबल प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मतलब कि अगर 2 घंटे पढ़े तो 4 घंटे प्रैक्टिस। चलो मैंने 2 घंटे सेल बायोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ लिया या एनिमल बायोलॉजी पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, चलो अब उस पर 4 घंटे प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे, अब 10 किताब कॉपी लाना पड़ेगा, उसके टेंशन मत लो, आप बायोटेक्निका ऐप इंस्टॉल कर लो। उसमें हम फ्री आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको इस्तेमाल कीजिए, आप फ्री टेस्ट सीरीज ले लीजिए। उस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कीजिए, टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है, आपने ये यूनिट पढ़ा, आपने ये टॉपिक पढ़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए।
उससे क्या होगा, समय बचेगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा चांसेस क्वालिफाई करने का। प्रैक्टिस करते जाओ एट बायोटेक्निका। अगली चीज, रिवर्स इंजीनियर द कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय हम क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं कि ठीक है माइकलिस मेंटल इक्वेशन मैंने पढ़ लिया, ठीक है ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है। पढ़ने के बाद सोचो कि इस पर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। खुद भी एक क्वेश्चन फ्रेम करो, अपने फ्रेंड को भी बोलो एक क्वेश्चन फ्रेम करो, टफेस्ट क्वेश्चन मेरे लिए फ्रेम करो मेरे दोस्त, मुझे दो। वो मुझे देगा, मैं उसको दूंगा। देखेंगे कि क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं मतलब कि रिवर्स इंजीनियर कर दिया हमने कॉन्सेप्ट को। तो जब आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इंजीनियर कर सकते हो, क्योंकि आपने रिवर्स इंजीनियर करके पढ़ लिया ऑलरेडी। उल्टा पढ़ लिया तो सीधा पढ़ना आसान होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। गाड़ी को अगर रिवर्स में चला लिया जो, वो स्ट्रेट तो आराम से चला सकता है, करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रिवर्स इंजीनियर योर क्वेश्चंस। अब आते हैं अगली चीज, टाइम योर क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके मोबाइल में तो स्टॉप वॉच होता ही है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइम योर क्वेश्चन। पार्ट सी के क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। पार्ट बी और पार्ट ए के लिए 1.5 मिनट काफी है। पढ़ो, सॉल्व करो। सो पहले क्वेश्चन लो, उसको पढ़ो। पढ़ते टाइम ध्यान दो। बायोलॉजी में कई सारे वर्ड्स बड़े सिमिलर होते हैं, जैसे न्यूरॉन और नेफ्रॉन। अगर आपने गलत वर्ड पढ़ लिया तो गलत आंसर मार्क कर दोगे, और यही तो आपका पेपर सेटर चाहता है केयरलेस लोगों को हटाना। लेकिन आप केयरलेस नहीं हो, तो क्या करोगे आप अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद सॉल्व करोगे, लेकिन अपनी पढ़ने की स्पीड को आप बढ़ाओगे। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। स्पीड बढ़ा लिया। सो दैट इज अबाउट टाइमिंग योर क्वेश्चन। 3 मिनट से 5 मिनट फॉर पार्ट सी, और पार्ट बी और पार्ट ए के लिए आपको 1.5 मिनट। आइए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग। अब ये बायोटेक्निका में हम लोग बहुत हमेशा करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप सॉल्व मत करो, आप बस देखो और बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पहला, तीसरा, पांचवा। सो दे विल जस्ट राइट, वो बस लिखेंगे कि हाँ यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो उससे क्या होता है, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा वाला आप सॉल्व करने वाले हो। उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। जब आप एक्चुअली सॉल्व करने बैठते हो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। इंस्टेड आपको पता है कि अच्छा ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सो क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो उतना टाइम वेस्ट हुआ। पहले ही देख के समझ जाओगे इसको छूना है कि नहीं छूना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। आगे आते हैं, इंप्लीमेंट मेमोरी ट्रिक्स। मेमोरी ट्रिक्स कौन सी है? पहली चीज यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके सामने, वो ये है कि आपका माइंड जो है वो लॉजिकली सोचता है। अभी तक मैंने जो भी बताया, क्या मैंने कहा कि आप रट्टा मार लो? नहीं, बिकॉज मुझे पता है, आपको भी पता है कि आपका माइंड जो है ना न्यूरॉन से ऐसे सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब कि सीरीज में कनेक्टेड है। सिनेप्स मतलब कनेक्शन है उसके अंदर, राइट। तो आपका माइंड जो है ना कनेक्टेड चीजों को ज्यादा बेटर समझता है। तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? एरो एंड कनेक्टर्स, ठीक है। एरो एंड कनेक्टर्स। मान लो कि x leads to y leads to z, okay, and then z comes back to x। so, जब आप भी कोई साइकिल पढ़ रहे हो, केल्विन साइकिल या क्रेब्स साइकिल, जो भी पढ़ रहे हो, कनेक्ट करके पढ़ोगे कि इसके बाद ये होता है, इसमें ये एंजाइम आती है, क्यों आती है, रीजन क्या है, उस समय क्या अवेलेबिलिटी होती है, सेल के अंदर क्या कंडीशन होता है, तो इजिली आप पढ़ पाओगे। तो लॉजिकली सोचोगे, एरो और कनेक्टर्स का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट है कंपैरिजन टेबल। अब देखिए कंपैरिजन टेबल तो और भी मजेदार चीज है। मान लीजिए आपको फोन खरीदना है, अमेजोन पे जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे एंड्रॉयड लेना है कि आईफोन लेना है, ठीक है। एंड्रॉयड में ये वाली फीचर है, आईफोन में नहीं है, एंड्रॉयड में ये वाली नहीं है, आईफोन में। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लोगे, तो जब भी आप आईफोन को देखोगे, एंड्रॉयड के सारे फीचर आपको याद आ जाएंगे। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फॉस्फोरिलेशन, डीफॉस्फोरिलेशन, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी होती है कंपैरिजन वाली चीजें। एक को याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली याद है। इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेबल। तीसरी चीज हो गई कॉन्सेप्ट व्हील। कॉन्सेप्ट व्हील में क्या होता है? अब आपको एक सेंट्रल आइडिया है, हमने एक व्हील बना दिया। सेंट्रल आइडिया मान लो कि एम है, एम के सारे फीचर्स को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जब ड्रॉ कर लिया यहाँ पर हमने, तो क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट अगेन प्रॉपर्ली फॉर यू, ठीक है। तो जब मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, तो अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर लिया, इसमें सारे फीचर्स हैं, ठीक है। बीच में सेंट्रल आइडिया है, तो यहाँ पर ये फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2। इस तरीके से क्या होगा कि जब भी मैं इस व्हील को देखूंगा,
दिमाग जो है कलर्स को जल्दी याद करता है, तो फीचर्स कलर से एसोसिएट हो जाएंगे, इजीली याद रहेगा। तो कंपैरिजन व्हील्स भी है, इसकी सैंपल्स में, सबकी सैंपल्स मैं नीचे दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, प्लीज चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी है। फॉर्मूला चार्ट्स, बहुत सारे फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, उसका एक चार्ट बना लीजिए, अपने सामने रखिए, याद रहेगा। सो दिस इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग द मेमोरी ट्रिक्स। अगली चीज, मस्ट रिव्यू द क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि यू गो एंड अटैक, आप किसी देश पर अटैक करना चाहते हो, तो क्या करोगे? यू विल डू वन सिंपल थिंग एंड दैट इज कि आप अपने सारे हथियार को जमा करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हो? व्हाट डू? यू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यू प्रोसीड विद द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। द मोर यू सॉल्व द बेटर यू गेट, ठीक है। जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर होगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, टू बी एबल टू मेंटेन फोकस इन द एग्जाम हॉल। अब एग्जाम हॉल में जब बैठते हो, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी का पेन गिर गया, किसी का स्केल गिर गया, कोई सर से बात कर रहा है, इसमें डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ रोड पे कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन है, उस चीज से डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने माइंड को फोकस रखो, क्योंकि आपका माइंड ही आपको जिताएगा ये महाभारत। सो दैट इज वेयर टू बी एबल टू मेंटेन द फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल। अगली चीज इससे रिलेटेड है, एंग्जाइटी और नर्वसनेस। अब होता क्या, आपने फर्स्ट पास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है, अगर आपने कम क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप नहीं स्कोर कर पाए फर्स्ट पास में, तो आपको नर्वसनेस होने लगी, यू विल बी नर्वस, अरे लगता है इस बार मेरा एग्जाम खराब जाएगा। एग्जाम खराब जाए ना जाए पता नहीं, बट उस टेंशन में आप अगला क्वेश्चन जरूर रॉन्ग मार्क करोगे। सो दैट इज वेयर अपनी एंग्जाइटी, अपने स्ट्रेस, अपने नर्वसनेस पर ध्यान रखिए। अब आते हैं आज के अंतिम टिप पर, जो कि है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अब जो मेरा ये हेड है जो इस वक्त आपसे बातें कर रहा है, क्या आपको लगता है ये हवा में घूम रहा है? नहीं, ये एक बॉडी से अटैच्ड है। अगर ये बॉडी सशक्त नहीं होगी, अगर ये बॉडी स्ट्रेंथन नहीं होगी, तो क्या ये ब्रेन आपसे बात कर सकता है? ना मैं इतने घंटे बैठ सकता हूं, ना आप इतने घंटे बैठ के बात कर सकते हो मुझसे, ना हम 3 घंटे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, अनलेस कि हम अपने बॉडी का ख्याल रखें। तो एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बीच बीच में पॉजेस लीजिए, कंटिन्यूस मत पढ़िए, और अपने ब्रेन को हाइड्रेट करके रखिए, सही खाइए, अच्छा खिलाइए, और जीत आपकी होगी। सो दिस वाज अ बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी क्विकली कम बैक एंड टेल यू दिस। ये वीडियो एक कृष्णा की तरह आपको महाभारत में आपके जैसे अर्जुन को जीत हासिल जरूर कराएगा, लेकिन सवाल ये है कि आप इंप्लीमेंट करते हो कि नहीं। इफ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट, अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया ये सारे पॉइंटर्स, तो आप एक नहीं, दो नहीं, कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगला वीडियो जो मैं इसके बाद क्यों कर रहा हूं उसको जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने और सारे टिप्स की बात की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात की है कि कैसे सॉल्व करना है। तो जरूर देखते रहिए बायोटेक्निक का, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मुझे कि आपको क्या क्वेश्चन है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।